Hey, hi guys. In today's Connect, I will be sharing primarily about there are a couple of concepts which I'm exploring. So, okay, I just wanted to highlight, and it is a continuous of the previous session itself. Okay, now we so far what we have learned about big data, what is big data, various characteristics of big data, and various like data stream of the big data, limitations of those in the including characteristics, limitation, use cases we have observed. We have also observed the we also observe the use cases and also analytics maturity model in the previous session. Right now I wanted to touch base very quickly the kind of abbreviation we use in data में बहुत सारा वर्ड यूज करते हैं ना, वो मैं आपको थोड़ा सा बता दे रहा हूँ ताकि एटलीस्ट वो वर्ड जब भी आएगा ना, आप यू विल बी एबल टू रिलेट दोस क्विकली. ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, फटाफट मैं आपको ये बता दे रहा हूँ. ठीक है. डेटा प्रोजेक्ट कीवर्ड, जब भी आप डेटा बिग डेटा प्रोजेक्ट में काम करेंगे, कौन सा कीवर्ड आप यूटिलाइज करेंगे. ठीक है. सबसे पहले एलओबी ये टेक्निकल टर्म नहीं है, लेकिन कोई भी प्रोजेक्ट में काम करते एलओबी से आप उसको कनेक्ट और अलाइन रहना पड़ता है. वो है लाइन ऑफ बिजनेस. लाइन ऑफ बिजनेस मतलब कहाँ पे आपका वो सोल्यूशन एप्लीकेबल और इम्प्लीमेंट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड लाइन ऑफ बिजनेस. ठीक है. जैसे एक ऑटोमेशन का ही सोल्यूशन है, दैट इज गेटिंग इम्प्लीमेंटेड इन समवेयर. नाउ वो दैट पर्टिकुलर प्लेस और दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट कटिंग अक्रॉस टू थ्री सब प्रोसेसेस, जैसे O2C हो गया, R2R फिनांस का प्रोजेक्ट है, ऑटोमेशन वहां इंप्लीमेंट कर रहा हूं, लेकिन मेरा वो प्रोसेस कनेक्ट कर रहा है फिनांस, O2C, R2R, दीज ऑल डोमेन, इट इज कटिंग अक्रॉस. दैट इज कॉल्ड लाइन ऑफ बिजनेस. मतलब फिनांस का लाइन ऑफ बिजनेस क्या हो गया, आपका मल्टीपल अदर जो मैंने सब प्रोसेस बोला, वो लाइन ऑफ बिजनेस में फिनांस ऑपरेट हो रहा है ऑन दैट करेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑन प्रोजेक्ट. So this is what line of business means. It's like nothing but where what is the scope of the entire एक्टिविटी. तो बिग डेटा आप जब करेंगे तो बोलेगा लाइन ऑफ बिजनेस क्या है बिग डेटा का, तब आप बताइएगा कौन सा डोमेन से आप काम कर रहे हैं, कौन सा पर्टिकुलर सब प्रोसेस और प्रोसेस में आपका एक्टिविटी हो रहा है और काम हो रहा है और डेटा आपने कलेक्ट किया है. दैट्स व्हाट मींस लाइन ऑफ बिजनेस. ओके. नेक्स्ट इज another is what is data coming and process and sent out. ये एक ETL का प्रोसेस है, ये मैंने ऑलरेडी हाईलाइट कर दिया है इन वन ऑफ द प्रोसेस गाइस. आप उसको रेफर करो, यू विल बी एबल टू रिलेट दिस मच मोर क्लोजली. ओके, तो आप एक बार उसको रेफर जरूर करना. ठीक है. टाइप ऑफ डेटा. नाउ टाइप ऑफ डेटा, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डेटा. इसके लिए मेरे को थोड़ा पेन चाहिए एंड आई नीड वन मोर प्लेस, बट ठीक है, नो वरीज, आई विल गो विद दिस ओनली. ठीक है. टाइप ऑफ डेटा यहीं पे हम लोग एक्सप्लोर करते हैं. लेट्स सी. ठीक है. लेट्स सी यहीं पे टाइप ऑफ डेटा क्या क्या है. देखो, टाइप ऑफ डेटा मींस व्हाट, विच टाइप ऑफ डेटा वी आर कंज्यूमिंग. ये कुछ नहीं है, अगर लेमन टर्म में मैं बोलूं, वेरिएबल टाइप्स. वेरिएबल टाइप्स, टाइप ऑफ डेटा. राइट. अब कितना टाइप का वेरिएबल होता है. टेक्स्ट, सॉरी, टेक्स्ट. ओके, वेट गाइस. तो ये हो गया फर्स्ट टाइप ऑफ नंबर है. ओके. सेकेंड I have, yeah, sorry. First is text, okay. Then a number, okay. Image, then table. और tabular भी बोल सकते हैं, टेबल भी बोल सकता हूँ, tabular. Okay, tabular, table, image, number, text, audio, video. These are very typical. इसके अलावा भी है tuple, list, dictionary. इसके अलावा भी है मैट्रिक्स और एरे भी बोल सकते हैं, एरे. वेरियस टाइप ऑफ डेटा इज देयर. तो अब बिग डेटा में कौन सा टाइप वी कैन यूटिलाइज इट, विच टाइप ऑफ डेटा वी आर कंज्यूमिंग इन द बिग डेटा, ये आपको देखना पड़ेगा. एंड इट इज ह्यूज. ओके. लेकिन नाउ द पॉइंट इज, कहाँ आप देखो, टाइप तो वेरी वेराइटी है बिग डेटा. मतलब यहाँ ऑलरेडी आई हैव हाइलाइटेड दैट वेराइटी ऑफ डेटा, अनस्ट्रक्चर, सेमी स्ट्रक्चर है, एनी टाइप ऑफ डेटा कुड बी देयर. नाउ द पॉइंट इज, वेयर डू वी सेव दिस काइंड ऑफ डेटा, what are the area. One is DB, text file format, structure of the data. So we save this particular data in a database, text file format and structure of the data. So we save this file nothing but in DB. So database में तो सेव करते हैं, टेक्स्ट फॉर्मेट में सेव करते हैं. ये सारा फाइल मेरे को टेक्स्ट वैल्यू में मिलता है, डेटाबेस में मिल सकता है. सो रैदर आई विल से टाइप ऑफ इनपुट्स.
ठीक है, कहाँ कहाँ से इनपुट्स आता है, किस तरह का इनपुट्स हम लोग कंज्यूम करते हैं, जो भी डेटा सोर्स होता है, डेटा सोर्स का टाइप क्या होता है, ये तो टाइप ऑफ वेरिएबल टाइप हो गया, और जो वैल्यूज है उसका टाइप हो गया ना, जो सोर्सेस होता है वो क्या क्या टाइप में मेरे को मिलता है। आई कैन गेट दैट डेटा फ्रॉम ए डीबी, नंबर वन, ठीक है। नेक्स्ट मेरे को मिल सकता है ये टेक्स्ट फाइल के रूप में, टेक्स्ट फाइल विच इज मोस्ट पॉपुलर, बिग डेटा मोस्टली डेटा टेक्स्ट फाइल में आता है। कोई भी एप्लीकेशन है ना, वहां से वो एक्सपोर्ट टेक्स्ट फाइल में कर लेते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशन टेक्स्ट को वो कंज्यूम कर लेता है, इसको सीएसबी के अनुसार भी हम लोग यूज कर सकते हैं, दैट्स व्हाई टेक्स्ट फाइल में ये मोस्टली आपको ये रहता है, ये दैट इज मोस्ट मोस्ट पॉपुलर रेदर आई विल से। अनदर अपार्ट फ्रॉम दैट स्ट्रक्चर डेटा, अब ये स्ट्रक्चर किसी भी रूप में हो सकता है, टेक्स्ट टेबल के रूप में भी हो सकता है, टेबल के भी रूप में हो सकता है, एरे के भी रूप में हो सकता है, एंड अदर अदर सोर्सेस आल्सो डायरेक्टली एज ए स्ट्रीमिंग डेटा भी हो सकता है, स्ट्रीमिंग डेटा भी हो सकता है, कुछ भी, ओके। सो इन एनी अदर टाइप ऑफ फॉर्मेट भी हो सकता है, मोस्टली डेटाबेस और इसमें ही मिलता है टेक्स्ट फाइल में, और टैबुलर फॉर्मेट में मिलता है, मोस्टली टेक्स्ट फाइल रहता है, मोस्ट ऑफ द बिगेस्ट बिगर डेटा गाइस डिपेंड ऑन द फाइल फॉर्मेट एंड फ्रॉम द एप्लीकेशन यू आर कंज्यूमिंग इट। तो ये टाइप ऑफ इनपुट हो गया, किस तरह से किस टाइप का इनपुट हमें बिग डेटा में मिलता है। वेरिएबल टाइप, आई होप इट इज क्लियर, टेक्स्ट फाइल, नंबर फाइल, इमेज, टेबल, ऑडियो, वीडियो, एंड देन लिस्ट, डिक्शनरी, एरे, ऑल these आर क्लियर, आई होप इट इज क्लियर गाइस, ओके। नेक्स्ट पैरामीटर, ये तब क्या था, व्हाट वाज दिस, इज नथिंग बट दीज आर द टाइप ऑफ डेटा, apart from that some of the terminology I am trying to explain, some of the terminology, okay। Now if you go back here, click on this, go back this, okay fine। Now type of data is fine, frequency of data guys, बहुत, this is nothing but batch, how frequently I get this data, इसको schedule और time से भी आप जोड़ सकते हैं, टाइम से भी जोड़ सकते हैं, स्केड्यूल से भी आप जोड़ सकते हैं, टाइम मतलब फ्रीक्वेंसी, हाउ फ्रीक्वेंट यू आर गेटिंग द डेटा, टाइम मतलब कब है, आप डेली, एक एक पैरामीटर है डेली, मंथली, वीकली, आप किस तरह से वो डेटा आपको मिल रहा है, डेली, मंथली, वीकली, और स्केड्यूल अगर मैं बोलूंगा 10 AM, 6 AM और 12 नून, what time I wanted to actually trigger this particular bot, ये टाइम हो गया, तो इसको बोलते हैं schedule at time। ये दोनों मिला के this all two concept comes under one parameter which is frequency of data। फ्रीक्वेंसी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसके बेसिस में वेटेज मिलता है, एंड बेस्ड ऑन दैट हमें कंप्यूटेशन एंड स्टोरेज को भी मैनेज करना पड़ता है बेस्ड ऑन फ्रीक्वेंसी। ये शेड्यूल थोड़ा अलग है, फ्रीक्वेंसी मतलब मोस्टली दिस पार्ट, दिस इज अदर पार्ट, फ्रीक्वेंसी दैट schedule is another part, ये completely A section है, B section है, B section is like sub part of it, within this we can do it schedule, but दोनों similar है इसलिए मैंने clarify कर दिया। when it is frequency mostly daily, monthly, weekly, bi-weekly, quarterly, semester, based on that we can categorize them, fair enough। now volume of data, volume of data, now कितना data volume कितना process करा जा रहा है, I no need to tell you guys, अगर आपको पता है volume मतलब यहाँ space, size, ये सारा space, size, these are the two things, and another is lines of row, ये सारा पॉइंटर्स आते हैं वॉल्यूम्स डिसाइड करने में, स्पेस हो गया ये, और ये सब को हम लोग अनदर मेथड से भी कर सकते हैं, यूनिट, यूनिट एज ऑलरेडी हाईलाइटेड, टेराबाइट, पेटाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट, सेक्टाबाइट, ओके। सो दीज ऑल आर यूनिट्स, उसको भी वॉल्यूम भी हम लोग इससे भी मेजर कर सकते हैं विद इन बिग डेटा, फेयर इनफ, आई होप इट इज क्लियर। अनदर इज फ्लो एफिशिएंसी कैसे मेजर करते, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये कॉन्सेप्ट मेरे को और डीपर में जाके एक्सप्लोर करना है, और आई हैव टू आल्सो फिगर दिस आउट इन डिटेल। अनदर इज व्हाट, फ्लो एफिशिएंसी, data flow efficiency, how efficient that particular flow is, how efficiently it is consuming from multiple sources, from the multiple sources, let's say I have multiple sources, from how efficiency, इसको measure हम लोग कर सकते हैं, वो उसको बोलते हैं compression, with the help of compression we can measure how flowlessly data, how efficiently data is flowing within the data sources, from the data sources, compression, so based on compression we can figure this out guys, okay। now fine, now next point is nothing but challenges, what kind of challenges are there in the big data,
What kind of challenges are there in the big data? क्या क्या किस तरह का challenges हमको face करना पड़ता है in the big data, guys? Clear? So let's start on the challenges part. Now challenge क्या क्या है? What are the challenges that? देखो challenges को हमेशा whenever I categorize any kind of problem, ना I categorize those problem as business problem, people problem, technology problem, and mathematical problem or logical problem. ठीक है, चलो. So any problem, if you are working on any XYZ domain, always break that problem into this kind of bucket. ठीक है. First क्या है? Business problem. ठीक है, बिजनेस प्रॉब्लम हो गया. टेक्नोलॉजी प्रॉब्लम, बिजनेस के अंदर में ही बहुत सारा चीज आता है. पीपल, मनी, स्पेस, लोकेशन, XYZ. टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी प्रॉब्लम. टेक्नोलॉजी प्रॉब्लम में क्या क्या आता है? इसमें भी देखो इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड, इंफ्रा, इंफ्रा आता है. देन आता है टूल, ओके, स्टोरेज. इसमें बिजनेस में मैंने बोला पीपल, प्लेस, मनी. ऐसे तीन तीन करके लेके चलते, बट एटलीस्ट एक डायरेक्शन आपको मिलेगा कि चैलेंजेस किस तरह है, कैसे कैटेगराइज करना है. बिजनेस प्रॉब्लम हो गया, टेक्नोलॉजी प्रॉब्लम हो गया. नदर प्रॉब्लम ऑन दिस इज लॉजिकल प्रॉब्लम. मैं लॉजिकल प्रॉब्लम हाउ आई वांटेड टू सब लाइक हाईलाइट इज दैट लेट्स से आई हैव टू डिस्ट्रीब्यूट ए डेटा. ठीक है, तो डेटा फ्लो, डेटा फ्लो, मैनेजिंग ए बैलेंसिंग आउट ए डेटा फ्लो is a logical problem. Then data management, data management slash pipeline. This is also, this comes under logical problem or within big data. Okay, apart from that is data, there is many more. Okay, there is many more. One more on the data related or logic related is, I will say, availability, consistency. तो इस तरह से तीन तीन तो मैंने आपको बता दिया. अभी 9 ही प्रॉब्लम मैंने आपको बता दिया. एनी बिग डेटा में भी यही पीपल रिलेटेड प्रॉब्लम है. स्किल सेट, उससे प्लेस कहाँ सेव करना है, कनेक्टिविटी कहाँ है, बैकअप कहाँ पे है, एंड मनी, हाउ मच आई हैव एज टू मैनेज इट. This is at the last. Okay, when we are discussing technology, we consider this as lot, but while learning, but while implementing, this is also one of the critical parameter. उसके बाद infra, tool मैंने बता दिया, storage है. Then data flow, data management or pipeline, and then consistency. These comes under logical flow. ठीक है. अब these are like category मैंने किया. This is from my point of view. This is how I categorize problems and allocate it to it. Then I go deeper कि people में क्या problem है big data related, place में क्या problem है big data related. Like this I can go. But typical, if you ask like, hey, generic अगर मैं issue यहाँ explore करना चाहूँ, then first is generic problem is scale. Second problem is security. Third problem is availability. Fourth problem is consistency. Fifth problem is fault tolerance. Sorry, इसको थोड़ा सा I have to bit. Okay, no worry. Consistency, fault tolerant. Okay, fault tolerance. Another is data quality. These all problems comes under big data challenges: scalability, security, availability, consistency, fault tolerance, data quality. Okay, now इसको एक काम करते हैं. We can actually explore, search this right away, and we see what kind of challenges are coming up there. Okay, but these are typical, guys. These are the typical problems we come across from these sources which I have highlighted right away. So let us go to this quickly. Sorry. Okay, go to this. Okay, so maximize. So here, big data challenges. I'm not deleting it right now. I'm just searching. Then I will delete it again. यहाँ पे गया. Research, big data challenges. Big data challenges, right? Here, top 6 big data challenges to overcome. आप यहाँ से भी देख सकते हो, guys. I will highlight that. Follow this, whatever, wherever. Okay, these so many resources are there. Through these resources, let me delete this part completely.
Fine. There are so many resources are there. Natural language processing. I love this, by the way. Okay, now this is high level. Now, yeah, these are the table of content, introduction, big data challenges, so and so. Please go through this. You will be able to relate this. Okay, confusion with the data tool selection. How exactly we can do this? I will go to that tool also. मैं और detail में इसमें tool में जाऊंगा, so no need to worry at all. Now telnet data integration, so data integration assets. Okay, these are like various tools available. Security of data, find data. What are the challenges in healthcare industry? Leave that part. Healthcare, देखो ये specifically एक particular domain में ये, then he is highlighting cloud security में क्या क्या challenges. This is overall what I have captured. What I just captured, that was overall. The problem which I captured is overall what kind of problems anybody can face. That's the point, guys. ठीक है, स्केलेबिलिटी, सिक्योरिटी, एबिलिटी, कंसिस्टेंसी, फॉल्ट टॉलरेंट, डेटा क्वालिटी. अब सबका वन एग्जांपल वी कैन गिव एंड दैट्स इट, डन. ओके, विथ एग्जांपल सर्च करोगे आपको मिल जाएगा, बट दीज आर द टिपिकल प्रॉब्लम. ठीक है. Now this is done. Now any scalability, ठीक है, I will not able to scale, that comes under scalability. Security, I am not able to secure, make the secure of that much data. I have terabytes, petabytes of data. Making it secure, storing is another challenge, but apart from security is a challenge. Availability, all the time I will be able to consume those databases, it is up and running, that is called availability. And if there is any problem, then it is challenging. Since it is a large, there are a lot of storage, and backup needs to be there. If any storage is down sometime, backup needs to be up automatically. Cloud storage needs to be deployed. In one facility is down with the data, other facility needs to be up, and it has to be consumed. That comes under availability. Consistency is nothing but I should keep on getting the data continuously. So imagine I am buying some product, but I don't have that data of that product available, but that let's say discount, or let's say price details, or some kind of information not available. It's not consistent across search right? Then there is a challenge. So consistency means continuously providing the input which is required for that platform or project or product connected with big data. Comes under consistency. Means data has to be consistently available all the time to consume. That comes under consistency, this particular part, guys. Okay, फिर fault tolerant. Fault tolerant is a very interesting topic. Like if there is any, how can I explain fault tolerance? I need an example for it. Okay, wait. Okay. Okay, fault tolerant. What is fault tolerant? Is look at this. ये बता रहा है. Let me delete this part. Now, fault tolerant is a process that enables an operating system to respond to a failure in hardware or software. मतलब backup. Load balancer is a fault tolerant technique. Like look at this. Load balancer. By balancing that load, we are actually consuming this as a fault tolerant, right? So there is any problem in the data center 1, data center B and C will support on that time, and will be consuming the same. So I will save this also. I'll share this as well. So this is what comes under fault tolerance, guys. Okay. I hope it is getting clear a little bit, so that you can relate this as well whenever you require this, guys. Fine. Fault tolerance. Okay. Now this is done. Apart from that, if I go back, next concept. Okay, these are the challenges. I think I have highlighted the core challenges what come across. Last point which I want to tell you, or little bit more on the challenging part, is now what we need to do is defining analytic strategy. Okay, so how exactly we can define analytic strategy? Very, very important. Define analytic strategy, long-term plan for the role of analytics, key functionality. Okay, so defining, these are another challenges. Okay, these are not like I'm talking about from the challenge point of view. What kind of challenges comes across? Defining analytic strategy. Why? Because big data, when we are dealing with big data, now defining the strategy around big data itself is a very big challenge. Long-term plan. Okay, so I'll say long-term plan. Okay, long-term plan of analytics. Why? Because it is constantly changing. It is constantly changing. Big data is changing, right? It's agile. It's a humongous data. Today I have applied a model, but tomorrow it can also change. It can also change, right? Analysis can change.
The variables can change. So it is, we cannot long-term plan like 2-3 years down the line how the data look like. Can you plan it? We cannot plan. That's the challenge. Another is key function area. So key function area, do we have that data available to consume it or not consume it? Another, so this is nothing but that analytical strategy to define. It's a difficult in big data domain itself. Second, I will highlight is the skill set. Okay. Skill set is a problem. Why I'm learning? Because I am also not up to mark 100%, right? Why I'm learning? Because I am also not 100% in this particular parameter, skill set. So if I have to upgrade my skill set, I have to study this entire topic in detail so that I'll be able to relate this concept and apply them in real life scenario. Fair enough? Clear? Sorry guys, give me a second. Go back here and select this. Yeah. So here, skill. Okay. My skill, appropriate talent, I will say business expert domain, because to be honest, as per my experience, only tools will not help in big data. Domain is very, very important, and domain is important in all the analytics activity. Without domain knowledge, I cannot even do a significant contribution there. That's the fact. That's the fact. You have to know the domain very, very well. Okay, then tools. Now I will create a separate session on this, how exactly you learn a domain from the point of view of automation on analytics. Let's say you recently you get introduced to a particular domain, how exactly you analyze that entire domain in a shorter span of time, so that you can be more ready with the domain insight in order to implement the entire solution ASAP, right? That's the entire concept I'm highlighting here, guys. Is that clear? So domain part, I will touch base that as well. Apart from that, if I go back, give me a second. Okay, yeah. Another is, yeah, skills I was highlighting, find talent and technology expert, so and so, both is required. That comes under another challenge is this. So long term analytics कर नहीं सकते हैं, skills ज़्यादा है नहीं अवेलेबल, और है तो उसको ये दोनों कॉम्बिनेशन में मिलना मुश्किल है, टूल्स और डोमेन दोनों में मिलना मुश्किल है. दैट्स द चैलेंज हैपनिंग. इंफ्रास्ट्रक्चर, सर छोटा छोटा कंपनी तो इसको एक्सप्लोर भी नहीं कर पाएगा बिकॉज ऑफ द infrastructure, like for example the tools required, hardware and software cost, distribution system. Small companies can only do POCs most likely, and I don't know how can I define a small company, but it is, since it is for the larger organization, most of the bigger organization implementing it, and they can afford to also do it because they have real need of it, right? So on that sense, it is infrastructure, I will say, critical. Infrastructure is very, very critical, because based on infrastructure, cost depending, hardware, software, hardware like software, these all component comes into that. Now apart from that, there are other concept is distribution system. Okay, capex and opex, how exactly these we consume, how exactly we do it, that is the another parameter we need to observe. Identify scope of data. Another is scope of the data. Scope of the data, another critical point. Challenges, how exactly I'll define. I have a huge data set, so many columns are there, and I am new to it. I don't know the domain well. How can I know that this column, this value I require? Until and unless I connect my domain knowledge. I will plug my domain knowledge plus my based on domain knowledge, I will shortlist those columns or data or the input I required. Then I will apply skills. Then I will be able to get equals to, I will say like this, skills plus domain. Then I will able to solve the problem. Right, guys, clear? I hope it is also you are able to relate this little bit. Okay, fine. Now what is next? Now another point is, yeah, source of the data also I highlighted. Another is analytics implementation. This is very, very huge. We can take an entire session on this, that why analytics implementation getting impacted in the big data kind of problem. For the challenge is first challenge is continuous pipeline. So what happened is analytics. Okay, so I will, let me highlight analytics implementation. Analytics implementation. Now analytics implementation, what kind of problems comes across? That's the another area. The problems which comes across is continuous pipeline. I don't have data for every time. Like
Continuous pipeline is big data is evolving, right? Today I have this much data, tomorrow it is increasing. Everything, all three VQ is increasing, where velocity, variability, volumes, all is increasing. Now variety, if the velocity is fine, variety is increasing, then there is a challenge, right? Then can I perform that same analytics? I have to again share that feedback loop, that these are the changes in the data, then apply and adopt in the analytics model. That's why it is difficult to do that. So it is continuously moving, continuously evolving. So it is very difficult to make it changes or make or adopt changes. It is very difficult in the big data problems. Big data analytics, the biggest problem is adopting the changes. Now another is, since it is a large data, another last point is visualization. It is very difficult to visualize. I already highlighted this point. If you have so many data, big data, like 100 columns, and you wanted to represent some kind of statistics there, highlight some kind of value there, right? It is difficult to suppress that. So on that time, what approach we do? We take top 10, top 20, N10, N5, N5, in top 10 only we take, and that top 10 we apply our logic. We only visualize top 10 data out of it. That's how we summarize it as do it. But it's difficult. By doing that top 10, we miss a lot of data as well. Since it is big data, the data is spread across multiple large variables, like, or large numbers of variables. Now, when it is spread across large numbers of variables, even if even if I sync the scope of it by top 10, top 5, I will lose a lot of valuable data beneath it, right? That's the background. I hope it is clear and you get to understand the core concept which I try to highlight here. Big data projects, core keywords, whatever we observe, and kind of challenges we face in the big data, as well as we also try to talk about on the challenges in high level challenges, specific challenges and high level challenges also we addressed. Hope it is helpful. Thank you guys.